the fishing community, we are dispersing OAP, old age pension, for 9,000 people, 9,200 people in whole Puducherry Union Territory, sir. And moreover, the ban relief, which normally our fishermen community is suffering during the 62 days of ban, they almost doesn't have any money for livelihood. So the government of Puducherry, under the state fund, we are providing 6,500 rupees for each family of about almost 19,000 families. We are covering by giving 6,500 rupees for 62 days of ban. Whereas in the surrounding states, they are giving only 5,000 rupees. We are giving 6,500 from our own fund. All this is possible because of the generous fund that has been given by the honorable ministers from Government of India, sir. And the CSS program also, under the Matsya Sampada Yojana, on which you have come over here to know the results of this your scheme, sir, novel scheme, Prime Minister's Sampada Yojana. We are also actively implementing all the schemes that the Government of India is asking us to implement. The money that we are giving livelihood, we are dispersing 3,000 rupees per member. Almost 22,343 members, we are giving this 3,000 rupees in the whole of Union Territory, sir. Sir, we have requested in the month of March, the Government of India was able to give some 108 crores for developing fish landing centers and expansion of fishing harbor in Puducherry, sir. Now, another proposal we have sent it to the Government of India for 189 crores. So this money is very, very small for Government of India, sir. So for developing Karaikal and other regions, apart from the Mahe the fisheries harbor. Sir, our Mahe people, sir, they are only 515 people, sir. We have given a ban relief this year. For there are only 2 cooperatives of having 1,572 members, and the group insurance coverage has been given to all the fishermen family in Mahe region. We have covered the insurance premium, sir. The Government of India is bearing the 90% of the cost of the premium that they are insuring for their boats in Puducherry region, sir. And apart from that, before ban period, this time we have dispersed around 15 crores of rupees for the ban period, before ban period, sir. Because we have helped the fishermen community in time, so that there will not be any problem for their livelihood. And we have increased the reactivation charges of the boats, mechanized boats, from 20,000 rupees to 30,000 this year, sir. So these are the some good things that we have been doing, sir. And moreover, the Puducherry fishermen are all getting 12 rupees as diesel subsidy for the mechanized boats. It is not happening in other parts of the country, sir. They are giving, normally we refund the VAT, but in Puducherry, sir, along with the refunding VAT, including the refunding of VAT, we give 12 rupees per liter, because they are taking almost 40,000 to 45,000 of liters of diesel per, they are taking from the government, sir. We have established consumer petrol banks for our fishermen's services. So these are the good initiatives by our Puducherry government under the leadership of our Honorable Chief Minister. And we are requesting the Honorable Union Minister and the State Minister to visit our Mahe fishermen harbor, sir. Once you see that, sir, I think you will have a good idea, so that this year we can complete. I thought when I became a Minister of Fisheries, I promised these people to complete this Mahe fishermen within a year. But because of the financial help and the technical details that we have to receive from the technical bodies, we were not able to complete. So if our honorable ministers can come there and see, I think you will give a solution, so that by next year, end of next year, I think we can, our fishermen from Mahe can have the facility of harboring, parking their boats in our own areas, sir. So with these few words, I congratulate the honorable ministers for taking
a parikrama of whole of country. And one more request, sir. So you have come to Mahe, sir. I request that you should come and you should complete the parikrama of Pondicherry also, sir, by coming to Puducherry region and Karaikal region. So with this few words, sir, I welcome the honorable ministers, the family, and the government of India officials. Thank you for giving an opportunity to be here along with you. Thank you very much. I hope all the people who have gathered here will have an interaction with the honorable minister. Whatever facility that you more require from the livelihood side or from the under the Matsya Sampada Yojana, any schemes you have to modify if it is useful for you, I think you can put before your suggestions to our honorable ministers. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you, sir. Moving on, I request Dr. L. Murugan, Honorable Minister for State for Fisheries, Government of India, for the presidential address. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாகர் பரிக்கிரமா, தமிழ் புரியுமில்ல உங்களுக்கு? தமிழில் பேசுடா? சரி. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாகர் பரிக்கிரமா நிகழ்ச்சியை குஜராத்தில் 3 மாதத்திற்கு முன்னால் தொடங்கி குஜராத்துக்கு அடுத்து மகாராஷ்டிரா, கோவா, கர்நாடகா முடித்து இன்றைக்கு கேரளாவில் நேற்றைக்கு தொடங்கி இன்றைக்கு மாஹேயில் நம்மளுடைய சாகர் பரிக்கிரமா நிகழ்ச்சியானது வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சாகர் பரிக்கிரமாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு மத்திய மீன்வளம், கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறையினுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு பர்சோத்தம் ரூபாலாஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து சாகர் பரிக்கிரமா ஆரம்பித்த டேட்டிலிருந்து அவர் கூட இருக்கின்ற மேடம் திருமதி ரூபாலாஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்புரை ஆற்றிருக்கின்ற பாண்டிச்சேரி அரசாங்கத்தினுடைய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்களே, மாஹேயினுடைய ரீஜனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சிவராஜ் மானே அவர்களே, டைரக்டர் என்எஃப்டிபி சிஇஓ ஸ்வரணா அவர்களே, டாக்டர் டைரக்டர் பாலாஜி ஃபிஷரிஸ் பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாஹே பகுதியை சார்ந்த பெரியோர்களே, மீனவ சமுதாய மக்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நீங்கள் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 9 ஆண்டுகள் ஒரு மிக சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சேவை, சிறந்த ஆட்சி, ஏழை மக்களினுடைய நலன், இந்த 3ஐ குறிக்கோளாக கொண்டு இந்த 9 ஆண்டுகள் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பெற்ற நாடாக நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். மீன்வளத்துறைக்காக முதல்ல நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 2019 தேர்தலில் மங்களூரில், நம்மளுடைய பக்கத்தில் மங்களூர் தேர்தல் கூட்டத்தில் மக்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள். 2019 தேர்தலுக்கு பிறகு உடனடியாக மீனவ மக்களினுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை மீனவளத்துறைக்கு ஒரு அமைச்சகம் வேண்டும் என்று. அதைத் தொடர்ந்து நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் ஒரு அமைச்சகத்தை கொடுத்தார், ஒரு மினிஸ்ட்ரி கொடுத்தார். இன்றைக்கு கேபினட் மினிஸ்டர் கொடுத்திருக்கிறார். அமைச்சகத்தை கொடுத்தது மட்டுமல்ல, 1947 சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து 2014 வரலும் வெறும் 3500 கோடி தான் ஃபிஷரிஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆனால் இந்த 9 வருஷத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 32,500 கோடி ரூபாய் மீனவர்களுடைய நிதிக்காக நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். சாதாரண விஷயம் அல்ல. 2015 ப்ளூ ரெவல்யூஷனில் 5000 கோடி, ஃபிஷரிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டில் 7500 கோடி ரூபாய். நமக்கெல்லாம் தெரியும், கொரோனா காலத்தில் ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜ்,
அதில் பிஎம்எம்எஸ்ஓ என்று சொல்லக்கூடிய திட்டத்துக்கு 20,000 கோடி கொடுத்து இந்த நிதியாண்டில் 6,000 கோடி ரூபாய் அதிகமாக கொடுத்து கிட்டத்தட்ட 38,000 கோடிக்கு மேலே இந்த துறையில் இந்த 9 ஆண்டுகள் மட்டும் மீனவர்களுடைய நலனுக்காக கொடுத்துருக்கிறோம். நம்மளுடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள், பாண்டிச்சேரி அமைச்சர் அவர்கள், பாண்டிச்சேரிக்கு மட்டுமே இந்த நிதியாண்டில் 100 கோடி ரூபாய், பாண்டிச்சேரிக்கு மட்டுமே இந்த நிதியாண்டில் 100 கோடி ரூபாய் பெருமானம் திட்டத்திற்கான நிதி கொடுத்திருக்கிறோம். காரைக்காலில், பாண்டிச்சேரியில் ஃபிஷிங் ஹார்பர், நம்ம அரசாங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட். அதில் ஃபிஷிங் ஹார்பர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது, லேண்டிங் சென்டர், கோல்டு ஸ்டோரேஜஸ், ஐஸ் ஃபேக்ட்ரி, மாடர்னைஸ்டு ஃபிஷிங் மார்க்கெட். ஏன்னா நம்மளுடைய மீனவ சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க, மீனவர்கள் போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க, ஆனால் அதை கொண்டு வந்து விற்கிறது நம்மளுடைய சகோதரிகள் தாய்மார்கள் தான் போய் விற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வசதியான நல்ல மார்க்கெட் கொடுக்கணும், நல்ல தரமான மார்க்கெட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அரசாங்கத்தினுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது. அதுக்கான மார்க்கெட் ஃபெசிலிட்டி. அதே மாதிரி 5 ஃபிஷிங் ஹார்பர், நாட்டில் 5 ஃபிஷிங் ஹார்பரை நம்ம மாடர்னைசிங் ஃபிஷிங் ஹார்பர் ஆக்கணும். அதுக்கான நிதியும் ஒதுக்கி வேலையும் தொடங்கி இருக்கிறோம். அதில் ஒரு ஃபிஷிங் ஹார்பர் ஒரிசாவில் கொடுத்தோம், இன்னொன்று ஆந்திராவில் கொடுத்தோம், இன்னொன்று சென்னையில் கொடுத்தோம், இன்னொன்று முக்கியமாக எங்கே கொடுத்துருக்குறோம், நம்மளுடைய கொச்சின் ஃபிஷிங் ஹார்பரை மாடர்னைசிங் ஃபிஷிங் ஹார்பரா நம்மளுடைய கேரளத்தில் இருக்கிற ஃபிஷிங் ஹார்பருக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட 150 கோடி ரூபாய் பெருமானம் அந்த நிதியை கொடுத்துருக்கிறோம். அதற்கான இன்னாகிரேஷன் நாளைக்கு நம்மளுடைய அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைக்க இருக்கிறாங்க, நாளான்னைக்கு நம்மளுடைய கொச்சியில். இப்படி நம்ம ஒரு பக்கம் மீனவத்துறையினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதே மாதிரி மீனவ மக்களினுடைய நலன். நம்மளுடைய பிரதமர் இந்த 9 ஆண்டுகளில் அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டம், ஒவ்வொரு ஏழை எளிய மக்களும் வீடு வேண்டும், கௌரவமாக வீடு இருக்க வேண்டும், அதுதான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுடைய கனவாக இருக்கிறது. நம்மளுடைய பிரதமர் ஒவ்வொருவருக்கும் வீடு கட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதே மாதிரி தான் குடிநீர் வசதி, நல்ல தண்ணி, நல்ல வெள்ளம் நம்ம குடிக்கணும். அதுக்காக பிரதமர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே பைப் மூலியமாக, குழாய் மூலியமாக குடி தண்ணி கொடுத்துருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் டாய்லெட் கட்டி கொடுத்துருக்குறோம். பிரதமருடைய ஆயுஷ்மான் பாரத் கார்டு கொடுத்துருக்குறோம். அதே போல் மீனவ மக்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை நாம் நிறைவேற்றியிருக்கின்றோம். கேசிசி கிரெடிட் கார்டு, நம்மளுடைய அமைச்சர் அவர்கள் எந்த மீட்டிங்கில் போனாலும் கேசிசி கிரெடிட் கார்டு எப்படி விவசாயிகளுக்கு கிடைக்குதோ அந்த கேசிசி கிரெடிட் கார்டு மீனவ மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு மிக முக்கியமாக அவருடைய முயற்சியில் நாம் கேசிசி கிரெடிட் கார்டு இன்றைக்கு ஃபிஷர்மேன் மக்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். இப்படி பல நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்லாட்சி நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சகோதரர்களே, மீனவத்துறையில் மீனவர்களுடைய நலனை போற்றும் விதமாக இந்த அரசாங்கம் பல்வேறு நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகையால் நாம் அனைவரும் இணைந்து நம்மளுடைய பிரதமரனுடைய இலக்கு 2047 இந்த நாடு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இருக்க வேண்டும். அதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Thank you, sir. We are indeed blessed by the presence of Sri Parshottam Rubalaji, the Honorable Union Minister for Fisheries, Government of India. May I request you, sir, for addressing the gathering here. नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। पुडुचेरी के हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय श्री के लक्ष्मी नारायण जी, मेरे साथी जिन्होंने अभी आपको संबोधित किए, डॉक्टर मुरुगन जी जो आपके पड़ोसी भी है, हमारे एनएफडीबी के सीईओ मैडम सुवर्णा जी, यहाँ के रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर शिवराज मीना जी, डायरेक्टर फिशरीज बालाजी, सो एक बालाजी हमारे साथ भी है और एक बालाजी आपके साथ भी है,
यहाँ हमारे दो तट की सुरक्षा के लिए सुसज्ज हमारा कोस्ट गार्ड के दो ऑफिसर्स हैं, निवेद जी और एस जेविन जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माहे मंडल के अध्यक्ष ये दिनेश जी इधर विराजमान हैं। हमें इतनी लंबी परिक्रमा में हमारे साथी मंडल के अध्यक्ष यहाँ मिल गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीजेपी के एससी मोर्चा के लीडर जया चंद्रायन भी इधर विराजमान हैं, उन्हीं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको विशेष बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों ने पार्टी की ओर से मेरा और मेरे साथियों का और सागर परिक्रमा का स्वागत करने का कष्ट लिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और मछुआरे समाज के मेरे साथियों, ये सागर परिक्रमा का इतना अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए और ये सारी व्यवस्था आप सब लोगों से मिलने की करने के लिए मैं पुडुचेरी के हमारे फिशरीज मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण जी का, उनके मुख्यमंत्री जी का और इस पुडुचेरी सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। आपने कुछ चीजें आपके प्रवचन में हमारे सामने रखी है। ये हमारे पूरे साउथ बेल्ट के चीजें हमारे विभाग का ख्याल रखने का काम मुरुगन जी करते हैं, तो ये आप इनसे मिलकर पुडुचेरी के लिए जो भी आप करवाना चाहे आप मुरुगन जी के संपर्क में रहकर करवा लीजिए। He is your guardian here from our department. आपने बजट 108 करोड़ का रखा है, ऐसा बोले। आपका बजट इस साल फिशरीज 108 करोड़ के आसपास का है। हमारा 200 करोड़ का योजना हमने आपको दिया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 218 करोड़ का है और यूनियन टेरिटरी के नाते आपका हक भी बनता है और अधिकार भी बनता है। आप यहाँ प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी फिशरीज को, सभी मछुआरे को केसीसी मिलना चाहिए। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मछुआरों के लिए इनको उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। वो पहले नहीं था, वो देश में किसानों को मिलता था। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी भी देना चाहूँगा। 25,000, 50,000 ऐसे रुपयों की अगर किसी को जरूरत पड़े और मार्केट से आपको बोरो करना पड़े, किसी से आप लेने चाहोगे तो यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो क्या चार्ज करते हैं, कितना? 25% तो बढ़ ही रहा है जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ। और गुजरात में किसी को पूछा था 10% कहा था, कर्नाटका में किसी को पूछा था 14% आया था। मुरुगन जी यहाँ तो 20% लोग ले रहे, 20 से 24%। आप लोगों को मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं कि 20% का मतलब क्या होता है? 10 महीने में 2 गुना हो जाता है। आपने 100 रुपये 1,000 रुपया लिया, 10 महीने में 2,000 तो इसको इंटरेस्ट का देना पड़ता है। और इसी के चक्कर में अगर कोई चला गया तो वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकता है। इसी में से छुड़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिशरमैनों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय किया है। वो कैसे मिलता है ये मैं आपको बता दूं। उसका इंटरेस्ट कितना है?
पता है 7%, 7% साल का, एक साल का 7%, और वो भी अगर आप जमा करा दो इस साल के अंदर ही तो 3% भारत सरकार जमा करा देगी। सो आपको सिर्फ 4% से मिलेगा, सिर्फ 4, ओनली 4%। कहां 24% है मार्केट में और कहां 4% है। ये नरेंद्र मोदी जी की देश के फिशरमैनों के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है आजादी के अमृत महोत्सव के काल में। वो पूरे और सभी को ये मिलना चाहिए। 1,60,000 विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, उसमें आपको कुछ नहीं देना है, आपका आइडेंटिफिकेशन करना है कि आप फिशरमैन हैं, और आपका एक फोटो चाहिए हंसता हुआ, और आपका आधार कार्ड। ये 3 चीज देने से आपको 1,60,000 तक की कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना लोन आपको बैंक से देना है। बैंक वालों को इसमें रुचि नहीं है, ये हमको पता है। सो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि बैंक वालों के साथ बैठकर उसका कैंप लगाकर फिशरमैनों को ये सुविधा देने का आप प्रयास करें। और उसी में भी बैंक आपको अगर सपोर्ट नहीं करती है तो उसकी जानकारी हमको दीजिए, हम फिर इसको ऊपर से भारत सरकार के वित्त मंत्री से प्रयास करके सभी फिशरमैनों को दिलाने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी जो आ गई है, डीप सी फिशिंग के लिए हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए हैं, मार्केटिंग के लिए हैं, आइस बॉक्स के लिए हैं, वो सारी सुविधा आप कर भी रहे हैं। उसमें और अच्छी तरह से आप इन लोगों की मदद करें और फिशरमैनों की लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को नया मंत्रालय बनाने का संकल्प ही इसलिए किया कि भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी ये हमारा मछुआरा समाज है। 8,000 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का अपना ईजेड है। ऐसे बड़े विस्तार को आप काम करने वाले लोग हैं। सो इन सबको मदद करने के लिए और इनके लाइवलीहुड को बनाने के लिए और देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने में ये डिपार्टमेंट और ये फिशरीज समाज काम कर रहा है। इनके रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए, उनके मार्केटिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए, उनके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए हमारे विभाग की कई योजनाएं चल रही हैं। आपके पुडुचेरी गवर्नमेंट के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से इनको और भी धरती पर उतारने का हम अनुरोध कर रहे हैं। और इसी को देखने के लिए, आपको मिलने के लिए मैं आया हूं, आपसे बातें करने के लिए मैं आया हूं, आपका सुझाव लेने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि ये विभाग नया हो रहा है, नया विभाग मोदी जी ने बनाया है। सो इनकी जो नीतियां हैं, वो नीतियां में भी आपकी राय क्या है वो जानने, सुनने और समझने के लिए मैं ये सागर परिक्रमा का कार्यक्रम चला रहा हूं। इसके चलते आज मुझे यहाँ पुडुचेरी के इस माही सेंटर पे आने का अवसर मिला, आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, आपसे सुझाव लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं पुडुचेरी राज्य सरकार के हमारे साथी मंत्री लक्ष्मी नारायण जी को साधुवाद भी देता हूं। और आप सब लोग भी इस बारिश की सीजन से, वैसे समुद्र में नहीं है, सो किनारे पर तो है ही है, मगर इधर भी आप सब लोग आ गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। Thank you very much, sir. Now it is a time for interaction with fishermen. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി സംവദിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ മേഖലകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മന്ത്രിയോട് സംവദിക്കാവുന്നതാണ്. नमस्कार रूबाला साहब, बहुत खुशी हूँ आप
माही तक आया। ये पर्यटन में सागर परिक्रमा यात्रा से माही को भी मिला के इतना छोटा सा ये पुराना फ्रेंच कॉलोनी अभी भी एक कॉलोनी के तरह चल रहा हूं, क्योंकि पौंडीचेरी से 500 किलोमीटर दूर इसको बराबर ख्याल नहीं रखते जा रहा है। मैं बहुत दुख से ये बात कर रहा हूं। मैंने लक्ष्मी नारायण साहब को एक स्पेशल सैल्यूट दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बताया बहुत विस्तार से माही का फिशरमैन का हालत। उन्होंने ये भी बताया, लेकिन एक गलत है। 22 years has already passed after getting sanctioned this Mahe fishing harbor project. 100% funding by the central government. It was creeping like a snail's pace. 22 years, still it is only 50 to 60% of the work done. And बहुत दुख की बात यह है, the governance has completely neglected the north piece of breakwater, which is harming very dangerously Mahe River. I do not know from where they got the idea to neglect the north breakwater, which is very critical and essential to this fishing harbor. Otherwise, in near future, Mahe River will not flow to the sea, as it is already blocked to a level, to an extent that during peak low water time, fishermen can walk through the Mahe River, cross. Earlier in 1950s, 60s, during my childhood, I have witnessed the cargo sailing boat coming all the way from the sea up to the Mahe bridge to load the wood. Now, not even the flat bottom outboard motor boat can pass if it is slightly bigger. So such is the state, very ecological problem. Nobody bothers, which has been raised several times, but got neglected. It is a very ecological problem. Now, as he has told about they are giving subsidy to the diesel, I thank you, sir, for highlighting that point. And I would reiterate here the small fishing boats, which was operated with the fuel of kerosene, making Pondicherry as kerosene-free state. Those fishermen was completely neglected, and they were compelled to go for high-priced petrol instead of the subsidized kerosene. We have already put up a representation to sanction the needed subsidy to the petrol for those fishermen who are using petrol as their fuel, which is very high. And we are also submitting this time to all your honorable good self a memorandum which is showing these two. Another third point I wanted to mention, pathetically, Mahe fishermen were pulled to a level that all other fishermen in Union Territory of Pondicherry had certain number of quota for their children's higher educations, whereas Mahe fishermen were put down with. This is related to the fisheries and fishermen. I read here interaction with fisheries and stakeholders. I do wonder what propaganda has been given by the government authority to the general public to have such interaction. No propaganda has been given. Fortunately, we are here to welcome the Honorable Union Minister who is visiting Mahe, which never happened, as you mentioned, in our past. And we are thankful to the government of India and the Prime Minister Modi making his mechanism moving properly throughout the country. And we thank you, Minister of State Murugan sir, for being here, which we didn't know, as nobody has disclosed who are all coming and what are all happening. And
by coming here, seeing you, very much delighted. As Minister Rapala has already mentioned, for whatever necessity, we have to approach you. Thank you very much. I conclude without wasting anybody's time, but these 3 points are very important. As a fisherman, I should bring to your kind attention. Thank you. Nice of you. சார், இந்த ஓபிசி இருக்கு இல்லையா, எம்பிசி, நம்முடைய எம்பிசி இஷ்யூ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, இடபிள்யூஎஸ் 2% அதான் இஷ்யூ இல்லை, அது வந்து பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் வந்து கமிஷனுக்கு அனுப்புகிறோம். No, that's what we are going to abolish it. We are going to abolish it. Anyone else? पहले यहाँ माही पीपल को मिलने के आए हम हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ. मैं प्रेसिडेंट पेयदर्शनी फिशर वुमन सोसाइटी माही, myself Asha Lada. I am requesting you, sir, your kind attention. The same point, that is the very urgent needy problem of Mahe, the completion of fishing harbour. Then another problem, we are facing the subsidy for petrol for the fishermen community. That already we have kerosene subsidy, it has stopped nowadays. Then we are requesting you, sir, then the subsidy for petrol for the fishing people. Another grievance I have to, sir, the insurance given to the victims of the who lose their life or injury during their fishing activities. There have to be a speedy sanctioning of the financial aid to these people. They are so lagging. They are getting this money, that is financial aid to the fishermen. That is, we are requesting the speedy action about this. Another thing I have to mention here, sir. Nowadays, good amount is getting as a pension for the old age for the fisherman community. And the problem here is that if it happened to be a government servant, his wife or someone in the his son or daughter, the fisherman is not getting the pension due to this case. As an individual, he is a fisherman, so he has the dignity of his own profession. So why they are denying this pension? It is I always thinking why this happens. If it is a government servant, his wife may be a government servant, his children may be a government servant, then he get his pension. That is his right. Then why the fisherman is denying this right? That is another problem you have to think over. And we are expecting kind action and enthusiastic action from the ministry. And thanking once again for coming over here and meet us. Thank you, sir. Honorable Minister Rubale ji, Murugan ji, and our Lishmi Naran ji, and Madam ji, सबको नमस्ते. सर, अभी हमारा ये बीच में जो पहले बोल दिया है, जो हार्बर है 20 साल से वो पूरा नहीं किया है, तो जितना जल्दी वो कर सकता है वो तो फिशरमैन को बहुत हेल्पफुल होगा. सेकंड तो ये है, ये दो फिशरमैन को जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो
बंद किया है वो मेडिसिन हो जैसा, इसमें वो भी रिस्टार्ट करने का कोशिश कर रहे कहा है। तो थर्ड थिंग ये है, तो छोटा मशीन में पहले केरोसिन का सब्सिडी दे रहा था, अभी वो केरोसिन तो बंद किया है पोल्यूशन के बारे में। ये लोग केरोसिन मशीन तो पेट्रोल में कन्वर्ट किया है, तो इन लोगों को पेट्रोल का सब्सिडी देने का प्रोग्राम करना है। ये तीनों हमारा रिक्वेस्ट है, पार्टी की वजह से थोड़ा ख्याल करना। थैंक यू। Hello. Today, so our Honorable Minister interacted with you, and most of them, most of the people, you mentioned that this fishing harbor. So now already our Minister fixed his program to visit that place, and after that we will take care of the work. Now, the presentation of memento to the Honorable Chief Guest. Now, I request our respected Regional Administrator, Sri Sivaraj Mena sir, to propose vote of thanks. Hello. Good morning to all. Today all we are gathered here for witnessing the program in connection with the Sagar Parikrama Yatra, a coastal visit program to interact with fishermen launched by the Ministry of Fisheries, Government of India, to address the problem of fishermen and allied workers across the country. I hope people of Mahe, especially our fisher folk, have presented their grievances and suggestions before the Honorable Minister. Okay. And hope fishermen are satisfied with this program. First of all, I thank the Government of India and Ministry of Fisheries to select this small place of Mahe for this prestigious program. I, on behalf of Government of Puducherry and being regional head of the Mahe, feel honored and privileged to get the opportunity to take part in this program. So, already our Honorable Minister explained you about the KCC, Kisan Credit Card. So, Mahe, actually we can implement it. So, I will organize the meeting with the bank and our fishermen community and will implement it. It's really very much useful because very less rate of interest is there. And in between just few pension certificate will be issued by our Honorable Minister to our fishermen. There are 63 numbers, but as a token, will issue few numbers. Sir, please. Sir, just 5 minutes. അടുത്തത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ഇപ്പം പുതുതായി പാസ്സായിട്ടുള്ള 63 പേരുടെ പെൻഷൻ വിതരണമാണ്. പേര് വിളിക്കുന്നവർ മുന്നോട്ട് വരിക. മള്ളായി അജിതൻ. അടുത്തത് ശർമിള. സുരേഷ് കെ. പ്രഭാകരൻ വി സി. അനിൽകുമാർ സി വി.
പേര് വിളിക്കുന്നവരൊന്ന് വേഗം വേഗം വന്ന് വാങ്ങണം. വാമനൻ CH. Okay, വാമനൻ. Okay, thank you, sir. So remaining will be distributed. Now, sir. Shiv Kumar. Okay, sir, I continue. So I would like to extend thanks to all our Honorable Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairies, Sri Purushottam Rupala, sir, who has interacted with us and heard our fishermen problems. I thank Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State Fisheries, who presided over this program. I would also thank Sri Lakshmi Narayan, Honorable Minister of Fisheries, Government of Puducherry, who made welcome speech for this program. I also thank Dr. Savarna, Chief Executive, NFDB, and Sri VII Masani, Member NFDB. I would like also thanks all delegates and dignitaries who blessed us with their presence, and I feel proud and thank you for making this event as successful. I thank all the officials and staff of the Government of Puducherry who made this program success. I would like to thank the fishermen and stakeholders of Mahe and people of Mahe who are present here. Finally, my sincere thanks to the media personnel covering this event. Thank you very much. Now, National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे